this was one figure of speech, which was personification. You completely understand about this, I guess. So learn more about it, and we will keep discussing this figure of speech. Another figure of speech which I want to tell you is metaphor. Okay. Metaphor it means when you compare two things without using as or like. For example, how do you compare two things? This key, this bed is red like rose. Okay, this bed is red like a rose. But here you use like, so this is not a metaphor. Okay. If you said this bed is red as roses. Okay. This जो bed है जो rose के जैसा red है. You said as roses. If you use as or like in comparing two things, it does not mean a metaphor. But when you compare two things without using as or like, then it becomes a metaphor. So let me give you an example. Snow is a white blanket. Snow किसके जैसी है? White blanket के जैसी है. Okay. So here हम snow और किसको compare कर रहे हैं? White blanket को. But हमने यहाँ ऐसा नहीं कहा है कि snow is like white blanket. अगर हम ये कहते हैं कि snow is like white blanket, तो metaphor नहीं होता. But हमने यहाँ कहा है snow is a white blanket. Snow white blanket की तरह है. हमने ये भी कहा कि स्नो व्हाइट ब्लैंकेट की तरह है, लेकिन हमने as या like यूज नहीं किया. So that's why it is a metaphor. Next one is the student is a shining star. Okay. Student जो है वो shining star के जैसा है. Student को किससे कंपेयर किया हमने? Shining star से कंपेयर किया. But हमने यहाँ as और like यूज नहीं किया. हमने ये नहीं लिखा कि student is like a shining star. अगर हम ये लिखते the student is like a shining star तो वो metaphor नहीं होता. But हमने लिखा है that student is a shining star. So it is a metaphor. Okay. So we are clear with two figures of speech, which is personification, and the second one is metaphor. Okay. We will check when these figures of speech will arrive in the poem. So let's start with the poem and then we will continue in the next chapter, next session. So here the wind is like challenges, and wind is like the challenges which come to our life. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. So here the poet is talking to the wind. He is saying something to the wind. वो क्या कह रहा है wind को? Poet को जो है, wind come softly. Wind जरा धीरे से आना. Don't break the shutters of the windows. जो विंडोज हैं उनके शटर जो हैं, विंडोज के शटर मैंने आपको बताया था, विंडोज जिससे हम खिड़की बंद करते हैं. So you just don't break those shutters of the windows. You just don't break the panels of those windows. Don't scatter the papers. Poet is telling all this to the wind that you don't do this, you don't do that. Don't break the windows. Don't scatter the papers. Papers को आप इधर उधर मत फैलाओ, इतनी तेज आएगी विंड तो. Don't throw down the books on the shelf. Books which are kept in the shelf. Books कहाँ पड़ी है? Shelf में पड़ी है. उसको मत गिराओ. So these things, poet is requesting to the wind that you don't break the windows, that you don't scatter the papers, that you don't throw down the books. There, look what you did. You threw them all down. So this is very important. This line, look at this line. That look what you did. So here the poet is telling the wind as you, right? Poet किसको कह रहा है? Look, तुमने क्या किया? देखो तुमने क्या किया? Look what you did. So poet यहाँ पे wind को you कह के बुला रहा है. Poet इस wind से as a person की तरह बात कर रहा है, as a human की तरह बात कर रहा है. So यहाँ पे क्या use हुआ? Personification. Are we clear on that? Let me explain you one more time. What is poet saying? There, देखो. Look what you did. Look, तुमने क्या किया? You threw them all down. तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया. So poet, आप ऐसे किसी से बात करते हो तो you कह के जब आप बात करते हो, you are talking to a person, right? But here the poet is talking to the wind. Okay, so here the personification, which figure of speech is used? Personification is used. And also you will learn about what other figures of speech in the poem. Here also he saying, you tore the pages of the book. तुमने books के pages पन्ने फाड़ दिए. You brought rain again.
तुम जो है बारिश, फिर से बारिश लेके आ गई. So poet is explaining to the wind as you. He is calling the wind as you, as a person. You threw the books down, you tore the pages of the books, you brought the rain, you are very clever. So he is talking to him like a person. The poet is talking to the wind like a person. So that's why the wind is being personified here. The figure of speech which is used here is personification. Okay, students? So you all just read the poem and find out where the personification is used, and also where the metaphor is used, where the two things are compared without using as or like. So you have to find that out in the poem. Okay, so just read the poem once. It's a very easy poem, very beautiful poem, and very simple. It's not, just don't think that it is a poem, so it will be difficult. Okay, generally we have a thought in this mind, in our minds, right? दैट पोएम है तो डिफिकल्ट होगी, पोएम है तो बहुत मुश्किल होगी, कैसे समझ में आएगी. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज वेरी इजी. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. So try reading it for a while and we will continue in the next section. Okay. So that's all for today's lecture, yes. Okay. Thank you so much. Everyone, this is Alfa Sobhani. I hope you all are doing well at your homes. So, what was going on? We have already started chapter number 2, the poem, The Wind. We have done the vocab part of the chapter, and today we'll be doing the poem explanation. Firstly, let's complete the assignment which was given to you yesterday. So, in assignment, I had given you these 4 words, and you had to find out the meanings of these words. Okay. So, for example, the first one was flourish. Flourish means to develop, बढ़ना, बड़ा होना, grow होना. So that means flourish, to develop in a successful way. For example, Ram went to the new company and he flourished. ठीक है, राम नई कंपनी में गया and he flourished, और वहां पे बहुत बड़ा बड़ा हुआ. बड़ा होने का मतलब ये नहीं that he grew in size. वो वहां पे बहुत successful हुआ, वो बहुत बड़ा हुआ. Another example, there was a small fire, but as the wind came, it flourished. बहुत थोड़ी सी आग थी, पर हवा चलने से और flourish हो गई और बढ़ गई. Okay. Next one is frail. Frail means weak. Okay. For example, I am feeling frail in my knees. घुटनों में मुझे बहुत weak feel हो रहा है, बहुत frail feel हो रहा है. Roar. Roar means who roars? Do you know which animal roars? The lion. जो शेर होता है, he roars. Okay. So roars means, for example, the cuckoo says coo. कोयल जो होती है वो कू करती है. तो लायन की जो आवाज होती है उसे बोलते हैं रोर, दहाड़ना जिसे कहते हैं. तो रोर मीन्स दहाड़ना. ओके, टू मेक अ लाउड साउंड. Next one is praise. Praise means किसी की भी तारीफ करना. To say something good about someone. The teacher praised the children for completing their homeworks. Okay. So I will also praise you if you complete your homeworks, if you complete your assignments. So you keep completing your assignments and keep submitting on Scholars ERP. Now, today we will start the wind, the chapter. So earlier, what I told you about the chapter, what I told you what this poem is. This poem is all about the challenges which we face in life. Okay. So here the wind, it means challenges. Wind is, what does the meaning of wind in the poem? It means the challenges which we face in life. In our life, so many challenges come. There are so many challenges which come in the life, but we have two options with that. Either we have to face it, कि हम उसको खड़े रह के हमारे पास जो भी challenges आ रहे हैं, जो भी difficulties आ रही हैं, either we face it, and the second option is that we give up and we fall down, that हमसे तो नहीं होगा, हमसे ये challenges नहीं face होंगे, हमको ये मुसीबत क्यों आ गई, and we fall down, हम give up कर दे कि हमसे नहीं होगा. And the second option is what? That you stand across the challenges, that you stand firmly in front of your difficulties and you face it and you follow that and you keep finding a solution of your challenges. आपके पास कोई मुसीबत आई है तो उसका solution find करें
बजाय कि उसको बंद करने की कि अरे ये मुसीबत क्यों आ गई, ऐसा सोचने के। सोल्यूशन, मुसीबत है तो सोल्यूशन भी होगा, राइट? सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट, here the poet explains the wind as a destructor. Okay, so the wind is the destructor, the one who destroys everything. आप जानते हो जैसे बहुत तेज हवा आती है तो क्या होता है, चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट? बहुत सारे घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत सारे खेत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. So here the poet explains the wind as a destructor, as something which destroys things. Okay, so for the poet the wind is a डिस्ट्रक्टर. डिस्ट्रक्टर मीन्स डिस्ट्रॉय करने वाली, चीजों को डिस्ट्रॉय करने वाली है. एंड ही मेंशंस, ही एक्सप्लेन्स ऑल द डिस्ट्रक्शन व्हिच द विंड डज. ओके, जो विंड जो है क्या क्या डिस्ट्रक्शन करती है लाइफ में, ही एक्सप्लेन्स दैट. जैसे फॉर एग्जांपल इट्स पेपर्स को खराब कर देती है, पेपर्स को स्कैटर कर देती है, इट डिस्ट्रॉयज द हाउसेस, इट डिस्ट्रॉयज द खेत, it destroys the farms, it destroys the crops, सब कुछ destroy कर देती है. So here the wind is explained as the destructor. So similarly हमारी लाइफ के अंदर भी ऐसे challenges आते हैं, ऐसी wind आती है. Wind means challenges आते हैं हमारी लाइफ में भी. The poet compares the wind with the challenges which come in our life. He compares difficulties which come in our life. जैसे विंड आती है और चीजों को डिस्ट्रॉय करती है, वैसे ही हमारे लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं और हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं. सो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप फर्मली स्टैंड करो या फिर आप विंड से गिर जाओ. सो सिमिलरली चैलेंजेस के भी आप जब आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप फर्मली स्टैंड करो कि जो भी चैलेंज आएगा मैं फेस करूंगा, या फिर आप उससे गिर जाओ या फिर आप उससे हार मान लो. ओके, so that's how wind is compared to the challenges in the life. He suggests that we should encounter these challenges. कि हम जब मानते हैं कि अगर बहुत तेज हवा आ गई तो आपको नहीं अच्छा लगता ना कि यार ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी. अब बहुत सारे चैलेंजेस जब आ जाते हैं लाइफ में, बहुत सारी डिफिकल्टीज जब आ जाती है लाइफ में, तो आपको नहीं अच्छा लगता ना कि आपकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. बट द पोएट सेज कि ये जो चैलेंजेस होते हैं इनको हम फेस करना सीखे, इनसे हम सोल्यूशन निकालना सीखे, तो ये हमारे फ्रेंड्स हो जाएंगे, तो ये हमें अच्छे लगने लगेंगे. सिर्फ विंड तेज आने पे आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप या तो विंड से गिर जाओ या फिर आप इतने स्ट्रांग हो जाओ, इतने फर्म हो जाओ कि विंड आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. But before that, I want you to learn very important thing in the poems. In poems, what we have is figures of speech. Now, what is a figure of speech? For example, figures of speech are the things, जैसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन उसका meaning अगर अलग होता है, so there figures of speeches are used. You won't understand, right? So let me give you an example. For example, धरती के ऊपर बर्फ की चादर बिछ गई. ओके, मैंने क्या बोला? लेट मी टेल दैट अगेन. द धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर बर्फ की चादर बिछ गई. देयर वाज अ ब्लैंकेट ऑफ स्नो ओवर द लैंड, ओवर द ground. Okay, so here when I say there was a blanket of snow, do you think सच में वहां पे व्हाइट ब्लैंकेट बिछ बिछ गई थी? नो, राइट? हम जो बर्फ है उसको ब्लैंकेट से, व्हाइट ब्लैंकेट से कंपेयर कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं था ना कि व्हाइट ब्लैंकेट को ही बिछ गई थी. यहाँ पे जो धरती के ऊपर सफेद बर्फ की चादर बिछ गई थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं, इसका सीधा सीधा मीनिंग तो है कि सफेद चादर बिछ गई थी, राइट? बट ऐसा तो नहीं है ना. इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि वहां पे बर्फ बिछ गई थी जो कि सफेद चादर जैसी दिख रही थी. Did you get me? Did you get me or not? Let me give you another example. Another example of it. This student is the shining star of the class. ये बच्चा क्लास का चमकता हुआ तारा है. सो यहाँ पे सीधा सीधा मीनिंग जो इस सेंटेंस का बन रहा है वो क्या है कि ये स्टूडेंट चमकता हुआ तारा है. ये सीधा सीधा मीनिंग है. पर एक्चुअली क्या ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट है वो तारा हो? स्टूडेंट तारा तो नहीं हो सकता ना.
But what I mean to say here is, यहाँ मैं कहना क्या चाहती हूँ, that student is very bright as a star. Okay, जो student है वो बहुत bright है, वो student जो है इतना bright है, इतना intelligent है कि वो तारे की जैसा चमकता है. मतलब उसका जो नॉलेज है वो जो है ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है क्लास का. ओके, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो तारा है. ओके, स्टूडेंट क्लास का चमकता हुआ तारा है. ये स्टूडेंट जो है ये क्लास का बहुत शाइनिंग स्टार है, एकदम तारे क्लास का शाइनिंग तारा है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट जो है तारा है. इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो है वो तारे की जैसा बहुत ब्राइट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है. Okay, am I clear with that? So there are so many figures of speech and we will learn about them in the coming chapters, in the coming poems. In this poem, let me tell you about a figure of speech which is called as personification. Okay, personifications means what? कोई भी एक चीज है उसको जो कि ह्यूमन नहीं है, जो भी कि पर्सन नहीं है, जो कि एक इंसान नहीं है, उसको आपने क्वालिटीज दी ह्यूमंस जैसी. ठीक है, कोई भी चीज को आपने ह्यूमंस जैसी क्वालिटीज दी तो उसका बोलते हैं कि इस चीज का पर्सोनिफिकेशन हो गया. ओके, व्हेन यू गिव ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ नॉन ह्यूमन थिंग. ठीक है, जो भी चीज ह्यूमन नहीं, चाहे एनिमल है, चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई फूल है, पेड़ है, पत्ता है, लेकिन आपको उसने ह्यूमन जैसी क्वालिटी दी, तो दैट इज कॉल्ड एज personification of that thing. Okay, let me give you an example. Lightning danced in the sky. बिजली जो है वो आसमान में डांस कर रही थी. So who dances? Humans dances, right? डांस कौन करता है? इंसान डांस करते हैं, right? लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं? बिजली जो है वो डांस कर रही थी. तो बिजली का क्या हो गया? Personification. Okay, did you get me? डांस कौन करता है? Humans करते हैं, right? It is the quality of humans to dance. But when we are saying that lightning was dancing in the sky, that means I am personifying lightning. मैं बिजली को पर्सोनिफाई कर रही हूँ. बिजली का क्या हो गया? यहाँ पे क्या यूज हुआ? पर्सोनिफिकेशन. ओके, लाइटनिंग तो डांस नहीं करती ना, लाइटनिंग तो कड़क रही है, बट हमने उसको कैसे लिखा कि लाइटनिंग जो है वो आसमान में डांस कर रही थी. तो लाइटनिंग का हुआ पर्सोनिफिकेशन. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. माय अलार्म क्लॉक shouts at me in the morning. मेरी अलार्म क्लॉक जो है मुझ पे सुबह सुबह बहुत चिल्लाती है. तो चिल्लाना किसकी क्वालिटी है? Shouting is the quality of whom? It is the quality of humans. चिल्लाना humans की क्वालिटी है, right? So आपकी अलार्म क्लॉक क्या चिल्ला सकती है? नहीं, आपकी अलार्म क्लॉक तो बज सकती है ना. इस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का यहाँ से मैं मीनिंग निकालू कि मेरी अलार्म क्लॉक मॉर्निंग में मेरे पे चिल्ला रही थी. ओके, सो इस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या निकलेगा कि मेरी अलार्म क्लॉक जो है मॉर्निंग में बहुत तेज तेज बजती है. तो फिगर्स ऑफ यहाँ पे आपने अलार्म क्लॉक का क्या कर दिया? पर्सोनिफिकेशन कर दिया, क्योंकि शाउटिंग जो है दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ ह्यूमन. सो अलार्म क्लॉक का यहाँ पे क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन हो गया. ओके, सो फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? एक सेंटेंस है, उसको लिखा गया है डिफरेंट तरीके में है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो कुछ और है. सो दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच. माई अलार्म क्लॉक शाउट्स एट मी इन द मॉर्निंग. यहाँ पे जो मैंने सीधा सीधा सेंटेंस लिखा है वो क्या लिखा है कि मेरा अलार्म क्लॉक जो है मेरे मॉर्निंग में मुझ पे चिल्लाता है. तो क्या अलार्म क्लॉक चिल्ला सकता है? नहीं, राइट? अलार्म क्लॉक तो बज सकता है, वो सिर्फ बज सकती है, लेकिन मैंने उसको लिखा कैसे कि ये मेरे पे मॉर्निंग में चिल्लाती है. मतलब अलार्म क्लॉक को आपने एक अलग मीनिंग दे दिया. So that is called personification here. Okay, and what did I tell you about the another example there? That this student is the shining star of the class. So वो student जो है वो shining star है class का. So that does not mean that that student is the star. That means that that student is the bright student of the class. So figure of speech means when you give some different meaning to a sentence, that is called figure of speech. इसके बहुत सारे types होते हैं. There are so many types of figures of speech, and one of them is personification. In personification, what we do? We give human characteristics, we give human qualities to a non-human thing.
a non-living thing or an animal, we give human qualities. That my dog is dancing today. तो dog dance कर सकता है क्या? इसका मतलब क्या ही dog जो है, actual meaning इसका क्या हुआ कि dog जो है वो उछल कूद मचा रहा था, right? लेकिन मैंने उसको कैसे लिखा? My dog is dancing today. Okay, so this is